Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good at home. Welcome back to your computer class. Today I have come with your chapter number 9, which is looping statements. As you can see, in chapter number 8 you have learned conditional control statements, where we have used different conditional statements which are used to control the flow of the program. Like we have used if-else statements, we have used different control statements in the chapter number 8, and we have also done the different programs that are based on conditional control statements in QBasic. So in this chapter we are going to learn looping statement, where we are going to discuss concepts of loop. So let us start. Here we have different types of loop, like for next loop, while loop, w and do loop. ठीक है? So we have different kinds of loops here: for next loop, while loop, w and do loop. So how we are going to use them in the program, that we are going to discuss. So before going further, I want to tell you what is the need of looping statement. As you can see, while you are doing programming, there are situations when you have to repeat one or more statements a number of times. As you can say, आपने प्रोग्रामिंग में ऐसी सिचुएशंस देखी होगी जहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स को मोर देन वन टाइम रिपीट करना पड़ता है. मीन्स इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ लूप ओनली. मीन्स जहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स को मोर देन वन टाइम यू वांट टू रिपीट इट, फॉर दिस यू हैव टू यूज द कंसेप्ट्स ऑफ लूप. लूपिंग मीन्स you are what you are going to do, you are going to repeatedly execution of the statement for a fixed number of time. As you can say, looping means repeated execution of statement for a fixed number of time. As you can see, loop हम कब यूज करते हैं, जब हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है. मीन्स व्हेन वी वांट टू रिपीट दैट स्टेटमेंट मोर देन नंबर ऑफ वन और मोर देन नंबर ऑफ टाइम. As you can see, हमें लूप कब यूज करने होते हैं, when you have to repeat वन और मोर स्टेटमेंट. जब आपको एक और उससे ज्यादा स्टेटमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना है, देन यू आर गोइंग टू यूज द कंसेप्ट ऑफ लूप. Next, you can understand with the help of example also. So let us understand the concept of a loop with the help of example. Suppose your instructor order you to run and take 10 round of a ground to warm up. आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको ऑर्डर दिया कि आपको 10 राउंड लगाने हैं ग्राउंड के for warm up only. The very first step that you need to undertake from your instructor is you have to fix a starting point and then you will start running. What will happen? आपको फर्स्ट चीज क्या करनी है, जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा उसने आपको जहां से फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा वहां से आपको रनिंग स्टार्ट करनी है. ओके, नाउ ऑन रीचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन योर राउंड विल बी कंप्लीट. देन यू विल टेक सेकेंड राउंड. इस तरह से क्या हुआ, आपने फर्स्ट राउंड लिया स्टार्टिंग पोजीशन से, फिर अगेन यू विल रीच द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, देन अगेन until you will complete the 10 rounds. You keep on coming on the starting point from where you have started the running. Okay, this way you will keep track of number of rounds and the process is completed. इस तरह से क्या होगा, आप जो number of rounds है काउंट कर सकोगे, because you have in the starting only you have finalized your starting point when you have started running. Okay, now what you have to do, the process which goes in your mind is that you set a value that is called your control variable and keep on incrementing it until the process is completed. आपने अपने माइंड में एक कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू सेट कर ली है, वो क्या होगी, कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग. मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था, फ्रॉम स्टार्टिंग यू हैव स्टार्ट रनिंग, स्टार्टिंग पॉइंट से आपने रनिंग स्टार्ट की, फिर आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आए. इस तरह से आप बार बार वेरिएबल, मतलब वेरिएबल क्या है आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज गोइंग टू बी इंक्रीमेंटेड. हर बार वो इंक्रीमेंट हो रहा है जैसे आपके राउंड्स कंप्लीट हो रहे हैं, जब तक कि पूरा प्रोसेस, जब तक कि आपके 10 राउंड्स कंप्लीट नहीं हो जाते. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लूपिंग. So I think this is clear to you practically what is the use of loop. Now we are going to learn it in programs, how we are going to use the concept of loop in a program of QBasic. You can see, for example, let us say the control variable is C. आपने एक control variable लिया है that is C, which starts afresh from the starting number.
हमने क्या किया, उसको स्टार्टिंग नंबर से स्टार्ट किया है, एंड दिस नंबर इज यूजुअली 0 और 1. हमेशा हम जो कंट्रोल वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू 0 और 1 ही लेते हैं. व्हेन यू विल कंप्लीट द फर्स्ट राउंड, जब आपने फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया तो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1. व्हेन यू हैव कंप्लीटेड सेकेंड राउंड, तो उसकी जो वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम उसमें क्या वैल्यू थी, 0 या 1. जैसे ही आपने नेक्स्ट राउंड कंप्लीट किया तो एक उसमें इंक्रीमेंट हो गया. लाइक दिस क्या हुआ, 1 + 1 is 2. नाउ अगेन यू विल गो, यू विल रिपीट इट. इसी तरह से आपका जो लूप है इट कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग. As you can say, we have taken the value of C is 0. When you have completed your first round, it become 1. Then you have completed second round, it becomes 2. If you will repeat third, then it is going to be incremented. So until you will complete your 10 round, it is going to be incremented. So in this way, we are able to use control variable in a program. As you can say, this value has to be incremented every time until the required process is रिपीटेड. जब तक कि वो सारा प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है, जो आपकी कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू है, इट इज गोइंग टू बी इंक्रीमेंटेड. ना कंट्रोल वेरिएबल हैज टू बी चेक्ड अगेंस्ट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ रिपीटेशन रिक्वायर्ड. मीन्स आपने कितनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, दैट इज गोइंग टू बी चेक्ड. ओके, नाउ हम बात करेंगे कि एडवांटेज क्या है लूपिंग की, हम क्यों यूज कर रहे हैं. एज यू कैन से इन प्रोग्रामिंग इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इट आल्सो रिड्यूस द मेमोरी स्पेस, बिकॉज if we are not repeating the instruction again and again, it means it is going to reduce our memory space. इससे हमारा memory space कम यूज होगा एंड जो number of instruction है that also will be reduced in the program. Now you will see the example what we have. Program number 1, it is the program to display infinite loop. अब हमने बात की कि looping is used to repeat the instructions. Here we are discussing infinite loop. You can see we have taken let $a is equal to God bless you. We have assigned $a as we have discussed in previous chapter. Only for assigning a string value to a variable we are using a with $sign. Fine. Then we have start the program. Then we have printed the value of $a. Then we have taken let b is equal to God is great. We have initialized b की वैल्यू को हमने क्या डाल दिया है, God is great. Then we have printed the value of b. Then again go to start. मतलब what you will see in this, it is going to be repeated again and again. आपने a प्रिंट किया, फिर b प्रिंट किया, फिर से आप स्टार्ट पे गए, फिर a प्रिंट किया, फिर b. इसी तरह से आपका प्रोग्राम क्या हुआ है, बार बार चलता जा रहा है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहा. So it means जो आपका प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट तक चलेगा. Means this program is going to display your infinite loop. I think this is clear. The output will be printed infinite time as no condition is applied in this program. I think this is clear कि इस प्रोग्राम में हमने कोई भी कंडीशन नहीं दी है, तो जो आपका प्रोग्राम है वो infinite time चलेगा. These two values are going to print infinite time. I think program number 1 is clear to you. So next we are going to discuss a program number 2, which is a program where we are going to print thank you 10 time by using counter. Means हमने यहाँ पे counter variable use किया है. With the help of counter only we are going to print the sentence that is thank you 10 time. As you can see, we have initialized a is equal to 1 and let $x is equal to thank you. We have initialized the value of thank you to x. Then we have started the program. Then we have what we have done, print $x, means whatever value we have assigned in x, that is going to print. Then we are going to increment the value of a is equal to a plus 1. मीन्स फर्स्ट टाइम 1 थी, अब उसकी a की वैल्यू क्या होगी है 2. नाउ अब क्या हुआ, अब उसने क्या किया, मैक्सिमम लिमिट चेक की. यू कैन सी हियर इफ a लेस देन इक्वल टू 10 देन गो टू स्टार्ट. जब तक a की वैल्यू 10 से कम है तो वो क्या करेगा, बार बार ही ऊपर जाएगा. मीन्स इट इज गोइंग अप एंड इट इज गोइंग टू प्रिंट द x, दैट इज थैंक यू. जब भी जैसे ही हमारे काउंटर की जो लिमिट है दैट इज 10,
लेस देन इक्वल टू 10 है, मीन्स जब 10 टाइम जब थैंक यू प्रिंट हो जाएगा तो जो आपका प्रोग्राम है वो एंड कर जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो इन दोनों प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है बेटा कि फर्स्ट वाले में हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्रोग्राम इज गोइंग टू एग्जिट, बट इन सेकेंड प्रोग्राम वी हैव गिवन अ कंडीशन, means we are going to print the thank you 10 times. For this we are going to use a counter. काउंटर के लिए हमने a लिया है, a को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं एंड वी हैव सेट द लिमिट लेस देन इक्वल टू 10. as the value of a reaches 10 it is going to end. I think the program number 1 and 2 is clear to you. Next we have for next loop. As you can say, when we are using multiple counter, as you have seen in last program we have used the concept of counter, means when we are going to use multiple counter in a large program that make the process quite tedious. As you can say, इससे जो आपका process है वो काफी tedious हो जाता है. It is difficult. The process of repeating a program segment in a loop can be simplified and control. इसको हम simplify भी कर सकते हैं और control भी कर सकते हैं by using for next statement. As you can see, it is a statement which is used when a group of statements are to be executed a specific number of time, and it will also reduce the length of a program. As you can see in the example, what we have used for, then we have control variable, then we have initial value to final value, means whatever value we want to assign will keep into initial to final. Then we have statement, then next, then we have to write control variable. As downside you can see a program to find the sum of 10 numbers. What we have done, REM, what is the use of REM? As you know, this is used to write the comment, means regarding which we are going to write the program. The topic of the program we are going to write in REM, as it is used for comments only. Then we have used clear screen. Then we have sum. Sum is the variable that we are using here for initializing the value. Sum we have assigned 0. Now we have used for loop. अब for loop में हमने क्या लिया बेटा, देखो कंट्रोल वेरिएबल इज योर आई हेयर. आई को हमने कहाँ से वैल्यू, उसकी लिमिट क्या सेट की है 1 to 10. इनिशियल वैल्यू इज 1 एंड फाइनल वैल्यू इज 10. Then we have written the statement that is your input n. Then we have taken sum is equal to sum plus n. Okay, now next what we have to do, next के बाद as I written the statement syntax only, next after that we have to write the control variable, then we have to print the sum. Now what we are going to do in this program, we are going to print the sum of 10 numbers. Now you will see in the flowchart also, firstly we have assigned the value of sum is 0. जो starting में जो sum है हमारे पास क्या है 0. जैसे ही हमारा कंट्रोल वेरिएबल आया उसकी वैल्यू क्या थी 1. अब हमने चेक किया जो i है, i इज द कंट्रोल वेरिएबल, जब तक उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है द लूप इज गोइंग टू बी रिपीटेड. आप देखो फ्लो चार्ट के अंदर बेटा दो कंडीशंस आ रही हैं, येस और नो. इफ नो दैट मींस वी आर गोइंग टू प्रिंट द सम. अगर आपकी लेस देन इक्वल टू 10, अगर ये कंडीशन आपकी क्या हो जाती है फॉल्स हो जाती है. अगर ये ट्रू है तो ये नीचे वाली स्टेटमेंट चलेंगे, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो वो सम प्रिंट करा देगा. ठीक है, हमने क्या किया देखो, अब लेस देन इक्वल टू 10, जैसे आई की वैल्यू 1 थी, फर्स्ट टाइम क्या हुआ चेक किया i इज 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिंट, इनपुट इज n. n में क्या है, स्टार्टिंग में सम इज 0, 0 प्लस 1 इज क्या हुआ 1. अब इनपुट में क्या हुआ 1, सम में क्या आया 0 प्लस n में क्या है 1. नाउ नेक्स्ट i की वैल्यू 1 से 2 हो गई, फिर ऊपर गया, फिर से इसने चेक किया, बार बार वो ऊपर जाएगा जब तक कि i की वैल्यू इक्वल टू 10 नहीं हो जाती. इट इज गोइंग टू बी रिपीट. तो दिस इज द यूज ऑफ for next loop where we have initialized the value from starting to final and we have written the statement. I think the program is clear to you. As you can see, we have the following statements that are involved in executing the for next statements. First one, we have control variable. As I have told you, here we have taken control variable that is I.
विच इज गोइंग टू बी असाइन इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल. उसको हम इनिशियल और फाइनल दोनों वैल्यूज असाइन करेंगे. फाइन. द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल वैल्यू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ टाइम द लूप इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. मतलब आपने जैसे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 1 to 10 दिया है, मतलब आपका लूप कितना टाइम चलना चाहिए, 10 टाइम. आपने वो स्टेटमेंट को कितना टाइम एग्जीक्यूट करना है, 10 टाइम. देन द सेट ऑफ स्टेटमेंट बिटवीन द 4 नेक्स्ट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. जो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है बिटवीन द 4 नेक्स्ट लूप दैट इज गोइंग टू बी executed. Then the next statement will increment the value of the control variable as we have done. Next I क्या कर रहा है, it is going to increment the value of control variable that is I by 1 and it is going to shift the program to the fourth statement. बार बार वो क्या करेगा, next increment करेगा और वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, प्रोग्राम को शिफ्ट कहाँ करेगा, अप. As you can see, जो next statement है that is going to increment the value of कंट्रोल वेरिएबल बाय 1. जो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है वो हम किस लिए यूज करते हैं, टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल एंड इट इज गोइंग टू शिफ्ट द प्रोग्राम कंट्रोल बैक टू द फोर्थ स्टेटमेंट. इससे जो क्या होगा, आपके प्रोग्राम का कंट्रोल वापस ऊपर शिफ्ट होगा. एज यू हैव सीन, नेक्स्ट आई करने से आपका कंट्रोल फोर्थ स्टेटमेंट पे चला जाएगा एंड इट इज गोइंग टू check the conditions again. Okay, now the new value of the control variable is compared against the final value as we have done. यहाँ पे हमारी जो i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है वो बार बार ऊपर जाएगी और कंडीशन के साथ चेक करेंगे उसकी फाइनल वैल्यू क्या है. एज यू हैव सीन 10 फाइनल वैल्यू थी, बार बार i इंक्रीमेंट होगा एंड इट इज गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद द फाइनल वैल्यू in the fourth statement. If it is less than, then the whole process is repeated. जब तक कि i की वैल्यू less than 10 है तब तक आपका प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा. And if the value of the control variable exceed the final value, the statement after the next statement is going to be execute. Next you can see program number 4, which is a program to print the table of 12 up to 5 time only. As you have seen, firstly we have used the statement clear screen. Then for a is equal to 1 to 5, मतलब a is the 1 is the initial value and 5 is the final value. Now what we are going to do, we are going to print the 12 into a. A is what? We have to print the 12 table from 1 to 5 only. Then we are going to multiply 12 with a. Then equal to 12 into a. As you can see the output which is on the command prompt. आप देख सकते हो आपकी जो output आएगी it will be like this. Then next way, फर्स्ट 1 से स्टार्ट हुआ है, देन इट इज गोइंग टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए. इस तरह से जब तक कि आपकी जो ए की वैल्यू है 5 टाइम, जब तक 12 का टेबल प्रिंट नहीं हो जाएगा इट इज नॉट गोइंग टू एंड. सो दिस इज द प्रोग्राम. नेक्स्ट वी हैव program number 5 which is used to display your name 9 time on the screen. Next you have a program to display your name 9 time on the screen. You have seen firstly we have used clear screen, then rem is the comment, means you are going to print your name. Then input means whenever you are going to take input from the user. Here we have written name please लिया हमने. Then we have taken $. Then we have taken for loop again. It is going to start with 1 to 9 as we are going to print the name 9 times. So we have initialized it 1 to 9. Then we have print $. Then next same thing we have done, but the program is different only. We are going to print the name 9 times and we have initialized it 1 to 9. After that we are going to end the program. So this is all about your for next loop. After this we are going to discuss in the next class. Okay, so after this whatever we have left in this chapter that we are going to discuss in the next video, and you have to practice all the programs that we have done today and the exercise questions also that is based on for next loop, that also you have to try. Okay, thank you everyone.